सो वेलकम स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको मिला है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन will always have the same sign as a if what is the condition. So how do we analyze this? So मान लीजिए y is equal to ax square plus bx plus c. If this is a quadratic expression, इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो आपको 6 केसेस हो सकते हैं. So how does the graph of this expression look like? So you can have 6 different graphs which are possible depending on the values of a, b and c. So first 3 cases जो है upward parabolas है. So you can have upward parabolas or downward parabolas. Upward parabolas में you have 3 cases, downward parabola में you have 3 cases. So upward parabola can be something like this, completely above x-axis, just touching x-axis, or cutting x-axis at 2 points. So the upward parabolas can be something like completely above x-axis, just touching x-axis, cutting x-axis at 2 points. ठीक है? So इस 3 ग्राफ में कौन सा ग्राफ कब आएगा? So आप एनालिसिस किया तो so all these graphs come when the leading coefficient is greater than 0. अगर leading coefficient greater than 0 है तो आपको upward parabolas आएगा, and d less than 0 है तो you won't get any roots. This is completely above x-axis. इसका मतलब ये x-axis को कट नहीं कर रहे, so there are no roots. This is if d is equal to 0, has repeated roots. एक ही बार कट कर रहा है, repeated roots. इसका 2 roots है, that means discriminant is greater than 0. Similarly, you have 3 graphs for downward parabolas. So downward parabolas भी completely below x-axis हो सकते हैं, just touching x-axis हो सकते हैं, cutting x-axis हो सकते हैं. So when do we get downward parabolas? When the leading coefficient is less than 0. अगर leading coefficient negative है तो आपको ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला आएगा, एंड ये वाला ग्राफ कब आएगा? डेल्टा बी लेस देन 0, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, इमेजिनरी रूट्स. दिस इज नॉट कटिंग एक्स एक्सिस. अगर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो रियल रूट्स, कट नहीं कर रहा है तो इमेजिनरी रूट्स. सो दिस इज इफ डी इज इक्वल टू 0, रिपीटेड रूट्स, इफ डी इज ग्रेटर देन 0. सो नाउ आपका क्वेश्चन क्या है? दिस एक्सप्रेशन शुड ऑलवेज हैव सेम साइन एज ए. इसका मतलब आइदर ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए या ऑलवेज नेगेटिव होना चाहिए. समझ रहे? इफ ए ग्रेटर देन 0, ए इज पॉजिटिव, सो द एक्सप्रेशन हैज टू बी ऑलवेज पॉजिटिव. इसका मतलब हर बार ऊपर है एक्स एक्सिस से. सो कंडीशन क्या होना चाहिए? डेल्टा शुड बी लेस देन 0. अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 है तो ये वाला एक्सप्रेशन का वैल्यू कभी कभी पॉजिटिव आएगा, कभी कभी नेगेटिव भी आएगा. The expression will not always have same sign. The sign depends on what the value of x is. So आप question में this expression has to have the same sign as a always. So ऐसा होने के लिए general condition is delta should be less than 0. This implies b square minus 4ac is less than 0. So b square is less than 4ac. So b square is less than 4ac. So option B is the right answer. Thank you.